Dear students, on the series of numerical physics, we have a numerical which is based on the angular velocity. Now, if you go through the numerical, a ball of mass 0.2 kg is suspended by a string of 30 centimeter. Keeping the string always taut, the ball describes a horizontal circle of radius 15 centimeter. Calculate the angular velocity. Now, a ball is suspended. स्ट्रिंग की लेंथ है आपकी 30 सेंटीमीटर मीन्स ये जो लेंथ आ रही है आपकी ओ बी और ओ ए 30 सेंटीमीटर का ए बी जो है जब बॉल मूव कर रही है हॉरिजॉन्टल मोशन इट इज लाइक दिस तो ये 15 सेंटीमीटर का रेडियस बना रही है और इसको टाइट रखा गया है तो इसमें एक टेंशन डेवलप हो रहा है और टेंशन जो है इस तरह से एक्ट कर रहा है। अब यहाँ पर हम देखें तो बॉल होगा तो बॉल का जो वेट होगा मींस mg which is acting downward towards the center of the earth ओके तो यहाँ पे हम देखें तो t जो है इस वर्टिकल के साथ में थीटा एंगल बना रहा है क्योंकि ये एंगल हमने थीटा अज्यूम किया तो ये t cos थीटा जो होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा बैलेंस करने के लिए mg को तो हम कह सकते हैं कि t cos थीटा विल बी बैलेंस्ड बाय mg और ये दूसरा कंपोनेंट हमने जो रिजॉल्व किया टी के हमने दो कंपोनेंट रिजॉल्व की वर्टिकल में टी कॉस थीटा हो जाएगा और हॉरिजॉन्टल में टी साइन थीटा हो जाएगा। अब टी साइन थीटा रिस्पॉन्सिबल है सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए तो यहाँ पे हम देखें तो सेंट्रीपिटल फोर्स को रिस्पॉन्सिबल है मींस इट इज इक्वल एम आर स्क्वायर ओमेगा ओके इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एम आर ओमेगा स्क्वायर सॉरी एम आर ओमेगा स्क्वायर ये फोर्स इसको बैलेंस करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स को। अब हमारे पास में यहाँ पे देखें तो देयर आर टू इक्वेशंस है ना वी कैन डिवाइड दीज टू इक्वेशन टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा एम आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन एम इंटू जी So it is we are having sin theta upon cos theta will be equal to tan theta and it is r omega square upon g. Okay. Now we have to determine the omega square. So omega square will be given by g into tan theta upon r. So we can write it here. Omega will be equals to under root g into tan theta upon r. So if we know r, if we know g and if we know tan theta, we can determine the angular velocity. Now here we can determine theta with the help of this. It is a hypotenuse for this triangle. If you see here that there is a triangle OAB and you know sorry in OAB, we have sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular is 15 centimeter means AB and it is OB. 15 divided by 30 will give you equals to 1 by 2. Sin theta is equal to 1 by 2 means theta will be 30 degree. This angle is of 30 degree. Now if we can substitute here omega will be given by 9.8 the value of g is 9.8 tan 30 divided by radius r that is 15 centimeter we can convert it into meter 0.15 meter so we can substitute here 0.15 this. Now we know that tan theta is equal to 1 upon root 3. Now it will substitute 9.8 upon 1 upon root 3 and 0.15. So finally if we calculate it, I have already calculated, it is 6.14 radian per second. This will be the angular velocity of this ball. So by just knowing the angle, if a question asked to you in this manner
Then just if you know this omega is equal to g into tan theta upon r, you can determine directly. Otherwise, we have got this expression omega is equal to g into tan theta upon r under root. Yes. So if you know the radius of the motion, if you know the angle which is made by the string with the vertical, and the value of g which is 9.8 meter per second square. So we can determine these with the help of these parameters. Okay.